Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Let's beat the traffic. नमस्कार नमस्ते. नमस्कार वणक्कम. खुश आमदीद Assalamualaikum. सत श्री अकाल మీకు అందరికి వందనము. जय स्वामीनारायण जय श्री कृष्णा. जय जनेन्द्र हमारे इस्माइली भाई बंधुओं को बोल दे याली मदद. और मुलानी मदद बोलते हुए सारी फीजी मदद बोलेंगे नीसा मुला बरजम हम आ गए हैं आपके प्यारे महिमा के द्वारा मैं सिर्फ फालतू बाबा And of course, myself, Faltu Rani, लेकर आपके लिए एक और drive time that's going to make it totally exciting and totally मस्तानी बन जानी. यस बरजान ऑफ कोर्स सोचते हैं अरे वाह आज क्या थीम है मंडे है क्या लेके आएंगे वेल बजन हमने तो ऑफ कोर्स कोविड का तो यू नो इज ऑलरेडी आउट ऑफ द होल सिचुएशन कोविड इज टोटली समथिंग पीपल आर फॉरगेटिंग बट एक्चुअली डोंट फॉरगेट इट बजन बिकॉज एवरीथिंग इज ओपनड अप यस बट स्टिल देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एप्रीहेंशन सम काइंड ऑफ डाउट सम काइंड ऑफ यू नो व्हाट यू गोना डू एंड एवरीथिंग people's minds. Yes, it is there. People, if you're not fully vaccinated, please make sure you get fully vaccinated. Now, what does it mean to be fully vaccinated? It just means that you've had both the doses. If it's JJ, one dose has been sufficient for you, but don't worry about that. You don't have to worry about 2 doses if at all you've had the JJ, Johnson Johnson's vaccine. But अगर आपके पास Moderna या Pfizer का vaccination है, तो good. If you already gotten both the shots, there's the first initial shot and then the booster shot. Great, more power to you. CDC already has told that you can actually socialize without a mask. Huh. But people are saying that it is better off if at all you are keeping a mask on for safety purposes only. I totally understand, Brajan. And right now, aapko bolte ki I told you since the economy is opened up, it's up to us finally make sure that everything is going smooth on the roads. So if at all you also want to share with me is what's happening in the Rasta, Brajan, give us a call here. It's totally sasta. 408-912-2479. Here, your Raste ka haal. Total sasta, mate. It's time for the Bandu Traffic Update. Call us from wherever you are at 408-912-2479. Wow, Fazani. Wow. You know, क्या हाल तुम्हारा? reminds me of the good old days when we used to get traffic updates, Fazani. हाँ. Yeah, seriously, look at check it out. What a beautiful, what It's a like nice, totally packed, huh? what a hue we have, and we have orange, reds, greens, wow, yellow signal, yellow signs everywhere. Wow. So much traffic. हाँ रे बाबा, it's crazy. क्या कैलिफोर्निया रीओपन क्या हो गया? पूरी दुनिया रोड पे लग गई. Of course, yes, Bajat. There is a lot of, it's a sluggish traffic on 880 already, by the way. Of course, to add to fuel to the fire, or what do you call it, right? Ghee dalne pe na, let's tell you what is actually disabled vehicle on 880 southbound, north of Mauri Avenue, which again is kind of impacting the traffic for sure, right? It's something that's going on there for sure. Watch out for that. Again, a hazard has been declared on 101 northbound because of an accident on Cesar Chavez. Watch out for that. It's on the 4th lane from the left. Watch out for that. And Pleasanton May, there actually is an accident near the Bernal Avenue on 680 northbound. Watch out for that. But the good thing is 680 is moving, unlike 880 and 580, which is totally like in red and orange zone. 680 is moving, Banjan. San Jose में आते हैं, brother. San Jose में actually there is an accident on 280 southbound near south of Baskin Avenue in San Jose. We just slowing on traffic and watch out for that. Sluggish traffic on 880 and 101 intersection there, which is really backed up. It's red color. The traffic is pretty heavy there. And similarly, intersection बात करें तो 680 and 87. Sorry. This must be 87. Yes, 87 680 का intersection जो है, the 280 का intersection जो है, there's actually a huge backlog over there. So if you're actually coming into traffic over there, you will actually face 15 minutes delay at least. So watch out for that and drive very carefully. Yes, Banjan, this actually is the repercussion of things opening up. We will have a lot of traffic on the roads. So all you got to do is take a deep breath and go. It's okay. Eventually, you'll enjoy the traffic because we're going to be on air, right? So, guys, give us a call here for sure. 408-912-2479 408-912-2479. And of course, आज being a Monday, हमने सोचा कि why not we talk about something which is very important, which actually our Indian cinema has propagated to that level, right? The concept of macho. Macho. Yes, machismo. The concept is about it. No, last time we talked about heroes who are like machismo heroes. No. We're talking just about the concept of macho. What does it mean to be like, machismo? Like, what does it mean to be macho? Macho man ka matlab kya hota hai? Because there was a particular narrative, if you notice, the whole 100 years of Indian cinema, right? Initially, the macho man concept was not there. Right. It was a man who was the nice, docile person. Like the person who would not be indulging in dishum.
Huh. Rather, would be indulging in connecting people, giving love, and making sure he's a good leader and all this stuff. Huh. Like the movies like Leader, for instance, Avara for the matter, if you look at it, right? There was no concept of macho man. वहाँ पे macho का नहीं था. He was just a good human being. Right? Right. Then later on, somewhere in the 60s and 70s, I think that I think we should actually blame our Dara Singh ji. Why? He used to make the macho movies. Oh, like. Yeah, he was the one who made The- Samson and all stuff. Hercules. Katta. Yeah, the thing came on, right? That's what. And then they started talking about Gabru Jawans concepts. Huh. Then, of course, Dharmendra Paji came in, right? And then Angry Young Man came in. And everything came on. Afterwards, we have macho, but things are changing right now. We actually have the feminine macho right now. Ah, Yeah. Sherni types. Yeah, Sherni types. Yeah. Who are we talking about? Vidya Balan. No, Tiger Shroff. But Vijay, the point is... What? It's also macho. It's a new concept of macho, but it's called metrosexual. It's fine. What? Yeah. That is not macho anymore. Well, yeah, the thing is having effeminate and having muscles. Being effeminate and also having muscles. Excuse me, what is effeminate mean? As a little bit, kind of a little bit of a very lipstick on your white lips, वो क्या है ना? सबको सबको आती आती नहीं. नहीं, और And मेरी of जाती course, नहीं. dancing like a Yeah, ballet. I'll show you six pack. Show you six pack afterwards. Yeah. All that is there, but then we'll come to that for sure. Lekin, I'll tell you what. Aaj macho Monday may we talk about that. Let's see what you think is macho, right? What according to you is machismo? What is that masculine macho concept which you have, right? Dudes, you must call us for sure, right? Yeah, what is macho according to you? Yeah, because there was, in fact, let me tell you, Vanjan, you ask women, right, Altu Baba, ki what is your definition of macho? What? At one time, women would say, the tall, dark, and handsome types. Uh-huh. And then now if you ask girls today, they'll say, "Oh my God, who cares about Chikna. chikna." Like you got to be fair and you got to have six pack. Or you have a And if horrible you're beard, ugly muscles, looking like Karthik Aryan and everybody else. Yeah, Yeah, okay. people actually have the kind of a concept of macho, right? Ugly looking like Karthik Aryan. Why would you go after Karthik Aryan? I didn't. Poor Hello. thing. Why? But everybody I talk about is going after you. If I talk about Tiger Shroff, is going after him. If I talk about don't Tiger care Shroff, about Tiger I'm going Shroff. after him. What is your See, I thing? think Tiger Shroff is highly overrated. Yeah, he is. Yeah. So, But he's supposed to be nation's crush, I believe. I didn't know that. Is he What? really a nation's crush? Ish. That's what I'm saying. The The way media is propagating they it. project him to be that. I so, know. They made Hema Malini dream girl, right? Ah. It's all PR and propaganda, Vanjan. Yeah, if It's Hemali Dream Girl, completely Tiger Shroff to me is a nightmare. Okay, but then I'll tell you what. Let's continue. What? He's a stark opposite, right? nightmare. That's what I said. You understand what I'm saying, right? Yeah. But then good, you got it. But Faltani, how about we do this? We talk about even the songs which actually propagated macho-ness. How about that? Okay. We'll pick songs which actually have, macho-ness in it. So you should actually think about songs which talks about the Gabru Jawan, or particularly energetic man, what was so-called male category. Which Male. are like dripping with testosterone. Correct. यानी कि गाना सुनते आपको मालूम होगा अरे ये तो आदमी गा सकता है ऐसे. Correct. So, गाओ क्या मैं? लगाओ कैसे? लगा But then here you got this a beautiful song which I think is totally talking about the macho-ness of the person. Who even is a singer there, right? This song movie called Gully Boy. Don't go by the melody, Balanjan. अभी आएगा शेर आएगा. शेर की जुबानी सुनिए शेर की कहानी यहाँ रात नहीं होता तेरे वहम को भगा दी लड़कियां ना गाड़ी अपनी अलग ही आबादी असल रैप का ये ज्वाला तेरे आत्मा में जगा दी क्योंकि फर्क है तुझे छेड़ने की तलब है तू नकली वाला मर्द मर्दान की पे कलंक हैवानियत की शक्ल जितनी तुझ में गर्मी उससे ज्यादा गर्म मेरा कलम क्यों इतना बेशरम काम का वो आज जिसमें तेरा कल नहीं क्या काम का वो काम जिसमें तू सफल नहीं बल नहीं दिमाग की जरूरत तेरे भाई की हुकूमत सच्चाई की ये सूरत भाग गया शेर सच्चाई की ये लहर हर मोहल्ले में घेर दादागिरी बंद कर तू चल तो संभल कर खुद को तू ढूंढ के तो उसको अमल कर नकली गुरूर उसको मसल कर नकली वजूद उसको कुचल कर जरा कम कर शानगिरी कम कर जरा कम कर लुखेगिरी कम कर ठंडा कर जो बुखार तेरे सर पर कम कर गुरूर ये खत्म कर जरा कम कर शानगिरी कम कर जरा कम कर लुखेगिरी कम कर ठंडा कर जो बुखार तेरे सर पर कम कर गुरूर ये खत्म कर भाग आया शेर भाग आया शेर भाग आया शेर सच्चाई की ये लहर हर मोहल्ले में घेर भाग
भजन आर्टिस्ट यहाँ पे है डिवाइन जी, साथ में है मेजर सी, एंड ऑफ कोर्स डिवाइन और मेजर का सही में यार क्या मिलाप है इसमें, देखा कितना सी हाउ मच ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज फिल्ड इन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग. भाग 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 आशेर. हाँ, भाग भाग भाग, हुई देर रेडियो हुई? लगा फोन लगा कॉलर्स ओवर देयर. I don't know, I'm just trying to make up a rap. कॉलर की लगाओ ढेर ऐसा बोलना. हाँ. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको कॉल करेगा, नंबर है 4089122479 60891247 तो फाता नहीं. हाँ. तेरे हिसाब से ऐसा कोई गाना, राइट, ऐसा कोई गाना जो को लगता है एकदम माछो वाला गाना है. Well, if you think about songs which are like totally, when you listen to the song itself, you feel like, "Arey, this is completely dripping with testosterone kind of songs." Well, or nothing wrong about it, right? Well, I'm talking about, you know, which are like. हाँ, लेकिन the nothing. See, machismo. today we're not trying to say something is wrong or whatever. Today we're just talking about machismo songs. Correct. We're not saying, "Oh no, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है," ऐसे नहीं बोलने वाले लोग. आज हम बस आपसे पूछने वाले, क्या लगता है आपको, right? क्या फालतू नहीं? Right. तो अपना बोलना. तो एक गाना तो मेरे को मतलब the first, as soon as we thought about this theme, the first song that came to my mind is a song in which it is totally like the beat of the song, the way the song is, the way the song has been performed, jo dance direction, I think it's Ganesh Acharya who's done the dance direction for that, sab kuch, and the way it has been performed also, right, is one particular song which is total that kind of machismo wala song. Oh really? Yeah, macho मतलब ऐसे लगता है वाह हाँ. क्या गाना है, क्या machoपन है, like you know that a kind of animal energy that comes out of the song. Correct. You know what I Macho mean? पंथी उसमें ना. हाँ. Exactly. तो फालतू नहीं. एक गाना ऐसा है from the movie, is it बाजीराव मस्तानी? I don't think it's बाजीराव मस्तानी. बाजीराव मस्तानी भी है, लेकिन ये गाना जो है जो लगाने वाला हूँ. कौन सा वाला? अच्छा, बाजीराव मस्तानी भी है. You want to play बाजीराव मस्तानी stuff? हाँ, एक और वो कौन सी मूवी थी वो, दोनों रणवीर सिंह पे फिल्माया गया है. Yes. एक गाना है जो रणवीर सिंह is in a negative character. Oh my God, even the way he dances, what is that? Khalibali, right? फालतू नहीं. Yeah. लगा दो गाना. हाँ, लगा दे. तू डांस कर रहे That is like बस. you. तू डांस कर पे डर लगेगा. मतलब वॉइस टाइम में डांस कर रहा है. Khalibaliya, कैसे बोला. Oh my God. I'll pick it on, Baba. Watch out. कलबिया के बला, कलबिया के बला, कलबिया के बला, के बला, के बला. कलबिया के बला, कलबिया के बला, कलबिया के बला. जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल. जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल. आपका बच्चा जिसमें जो है ना, ये पद्मावत फिल्म का है. पद्मावत में पद्मावती के जो
जो एक्चुअली खिलजी राइट अलाउद्दीन खिलजी का रोल है ना वो हाँ. एंड ओ माय गॉड व्हाट डांस डायरेक्शन सीरियसली इसमें डांस डायरेक्शन ही स्कोर्ड लिटरली गणेश आचार्य एंड यू कैन मेक आउट गाना है मतलब अच्छा किया उन्होंने आई थिंक इट वाज संजय बंसाली हिमसेल्फ राइट संजय लीला भंसाली yes. उनका ही म्यूजिक डायरेक्शन है हाँ. एंड एंजॉय कीजिए गाना कम बैक आफ्टर दिस बन जाए दिस इज माचो मंडेज ऑन द पैम पैम शो जहान घूम के हम तुझ पे आके रुक गए तेरे जैसे आसमां भी तेरे आगे आके झुक गए और कलमा तेरी चाहत का कहता है यही इश्क का मजहब दिल पे लगा है अब मेरे तेरा पहरा खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल एंड आपका बचन आप भी कॉल करके यहाँ पे बस बता सकते हैं कि आपका फेवरेट मैचो वाला गाना कौन सा था नंबर टू कॉल योर 4089122479 4089192247 और जब भी हमें सुन रहे हैं रेडियो डी हॉटीज ऑन 1310 AM एंड 92.9 FM पे मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ इस बता दो। वीकेंड को मुझे एक रेवलेशन हुआ रेवलेशन यानी कि फ्राइडे रात को मैं देर रात को कार चलाते हुए आ रही थी आहा आ रही थी तू और हाँ Very देर good. रात को एंड उस टाइम मैंने सोचा मेरे साथ और कोई नहीं है आहा तो लेकिन मुझे मालूम था कि वो यही कहीं है हैं? वो मेरा रेडियो डिहोटीज वाला ऐप अश्त वो रेडियो डिहोटीज वाला ऐप बदजान अगर आप मेरे को मालूम ही नहीं था कितना स्टूपिड हूं मैं इतना आज तक लास्ट फ्राइडे तक मुझे मालूम ही नहीं था इफ यू हैव एप्पल CarPlay in your car and you tell Siri to play Radio Dehoties automatically she starts playing हाँ वो तो मालूम है तेरे को and it'll show up on your console too you just have to go to the radio tab You didn't know that I didn't know that. I really would actually open my phone, go to the Radio DOTs tab, then sync it with my Bluetooth and then play it. I was like, चल so हट क्या यार तू भी पगली seriously. And only time when I didn't have to do that when I was test driving a Tesla. That's Uh-huh. pretty much it. And Yeah. when one of our bandhus told us. or about when the you're Tesla. driving in my car Yeah, or when I was riding driving. in your car because my car automatically has automatic connection to the Yes. to our because I Yes. like to listen to quality radio Faltwani. I'm sorry to say this. I'm a snob that way. I'm Exactly. sorry. Yeah. मुझे तो यार I require quality radio. Simple and plain Faltwani. Yes, absolutely, Banjan. And देर रात को, I'm telling you, Banjan, it's ridiculous what kind of choices you have. You want to listen to some good music. Oh man, we've got such an amazing collection of music. I mean, I know कि it is handpicked by us, but it's an amazing collection of music. It'll keep you awake and you'll sing along because you want to sing along with the songs. Of course, So ऐसा ही तो बना beautiful. है यार. By the way, and we actually pick songs which we like. So if we don't like it, it's not going to be there. मतलब if we don't like it, obviously you won't like it, right? Similarly, Correctamundo. like what you don't like, we don't like, right? Simple and plain. Right? Correctamundo. Because you love our show, we love ourselves also. Yeah. Right? What? We love you. You love us, so we love ourselves. So that way I you play. love the logic, Faltwani. I Yeah. love it. And first of all, let me go welcome everybody on our Facebook page. Facebook पे हम लोग welcome करेंगे दीपा जी को. दीपा जी, pam pam to you too. वाह वाह. She says one more Salman Khan. What? Kya Seriously? Salman Khan? In what way is it a Salman Khan? Please, yeah, it's not any which way. Tell me one macho song of Salman Khan. Yes. You will not find it. Jenny, No, that doesn't work. Hello, that is like. sorry. No, that is not. No, that doesn't fall. No, that doesn't fall into the category of macho songs, Faltwani. Macho song has talk about all the build power. उसके पास है गाना लेके I don't. नहीं वो मैं I बोल don't रही think. हूँ सलमान खान songs are rather effeminate even that एक बार फिर से selfish होके some बकवास songs oh That is- god I hello, cannot even like effeminate means nice also, not like घटिया songs with this. Yeah. एक बार selfish हो जाए. Sorry, but there
are some nice songs of, macho songs. Yes. Which you have, but give us a call, let us know. 408-912-2479. Arey, puri khatam karne do na, welcome. We also want to welcome our Meenakshi ji all the way from Boston. Thank you so much. And Florida से hello बोलते हुए हमारी श्री श्रेष्ठा जी and साथ में दीपक पांड्या जी भी वहीं पे बीच में उनका hello बोल Jai दिया Shri Krishna sir. Jai Shri Krishna to you too. And yes, I will not play the song until I get a call from you, Meenakshi ji. You know it very well, right? Yes. Number to call you 408-912-2479 408-912-2479. अभी सुनिएगा भजन एक गाना जो मेरे को देख के सब लोग गाते हैं. I don't know why though. ये लड़की गाती है. तो क्या माचो गाना ना? Correct. by the way, चूच करता है गलियों चौबारों में. Yes. Let me clarify one thing for you, Yeah, Patsari. yeah. Let me clarify one thing. Correct. A macho song does not have to be sung only by a male. Yeah. Okay. There could be female singing, but it's about celebrating the macho panti. Yeah. Right? That's what we're talking about today. This हिसाब से this guy's other song is also a macho It'll song. come, man. Wait. What are you waiting for? He's got ton of macho songs. अरे चूजा चूचू करता है गलियों और चौबारों में फेंका भागी करता फिरे तू तो अपने यारों में फेंका भागी कुछ नहीं सच बात जो बयां की दहाड़ है जवां की मर्दानगी मस्तानगी अब तू भी मान ले नैनों के जाम दे ओ आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा हुआ छोकरा जवारे 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 Falsi, you know what it is, right? Actually, it's about, it's like peacocking. It's like, somebody trying to show off, right? Yeah. That's what a macho thing is all about. Especially male folks, they really do that. They try to do like, I'm this, I'm that, and all stuff. Now, that's a macho song. Yeah. Well, have you noticed some of our African American friends, right? They walk like this. Really? Suddenly they'll walk like this. It's called macking, it seems. It's That's called what- peacocking, that's what, yeah. I was like, I didn't know. You didn't know that? Seriously, yeah, one of my friends, he would do that a lot. I So- tell you, that's why, I actually have the a swag of a lion, actually. So, I don't go in all those peacocking and all the stuff, You know me. कहाँ सीख के आओ अरे क्या सीखूं नैनों की प्यास को बुझाना तभी तो होगा छोकरा जवारे छोकरा जवारे And of course, बजा सुनिधि चौहान का ब्यूटीफुल एनर्जेटिक आवाज के साथ में मैच करते हुए विशाल दादलानी भी है वरना साथ में म्यूजिक अमित त्रिवेदी और सिखाए नैन क्या है पूरे तन को मैं भिगा दूं नजरे 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 Faltani, question for you. Huh. Do you know who the lyricist of this particular song is? Amitabh Bhattacharya! No! It is not him. I'll tell you. Kaushal Muni. No, it's not. It's not Kaushal Muni? No, Habib Faisal. हुआ छोकरा जवारे It's Habib Faisal, right? And Faltani, you didn't know about this, right? No, Ray. I thought it was Kaushal Muni. No, it's not Kausar Mani. Because she wrote Pareshan, that's why. She wrote Pareshan. She might write Pareshan because she is Pareshan. वो दिन दहाड़े तुझको तुझी से आ चुरा लूं मैं चल बहुत देख लिया टंके की चोट पे रेसी न ठोक के आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा हुआ छोकरा जवारे 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 And of course, Faltani, you must be very happy Why, man? because इसमें दीपा जी बोल दिया कि she liked Arjun Kapoor only in this particular song. And she's saying after that he's tight FS. Not really, Not yeah. really, He yeah. gave a very big hit with 2 states. That's all. बाद में हुआ, Hey, I wah, liked him in wah. Gunde also. Hey, boss, he's... I think what happened to him is, Faltwani, I think he lost his mom at the same time, right?
Yeah. He changed him totally, kind of a thing. I Yeah, feel sorry. yeah, Maybe. yeah. नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आज का Macho Mondays में. Who's this? Hello. Pam 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 What is pam that? pam pam pam. What is that? What song is that? I don't know what's... Tell properly, you know, why are you singing that song that way? Wow. Sure. Oh, you're trying to squeeze in Salman Khan in the song. God, what an effort you got to put, yeah, seriously. So, क्या ना macho सोचते Well, when you think about macho and all, Salman Khan doesn't fall in the category at all, yeah. Why? He falls short a little bit. Deepa, say something. Deepa has lost so much. She agrees with me. Actually, you know, I'm not a huge... Deepa, do you really take it very personally if I say something about the person you like? Deepa? Yeah, what? Oh, expression. Expression. देखो मैं एक बात बोलूंगी. There is something which we agree, there is something which we do not agree. लेकिन ये तो माननी पड़ेगी. This is completely absurd जो तुमने अभी बोला कि वो कैटेगरी में ही नहीं फिट. That is completely absurd. Okay, you felt bad. So you felt bad. You felt bad. Did you feel Hey, bad? listen to her, no? Question is, did you feel bad? Question is, did you feel bad? Did you take it personally? No. Like, I didn't feel that, but I don't absolutely. What that the sentence that you said, like वो fit ही नहीं होता, that I don't agree. No, that's fine. Agree, disagree. As you said rightly, it's okay. Songs I But did you take feel offended? Did you feel sad? I said that. Did you take it personally? My question is just that. Personally, अरे नहीं, personally क्यों लूँगी? Ah, that's what I asked you because you went silent and you went got angry. उसका भाई है क्या? Personally लेने के लिए? भाई मत बोलना. उसका पति है क्या? उसका boyfriend है क्या? पति मत बोलना. हाँ. पति उससे good looking है. हाँ. That's true. उसका boyfriend है क्या? नहीं ना. Lover है क्या? नहीं ना. पति है तो लवर नहीं हो सकता. Actually वो बोल नहीं सकते. Anyway ना भाई. Anyway. But Deepa, the point is, see how much of a mind wash they've done for people, right? Yeah. Mind wash is like not brain wash. Some people don't have the brain to wash it also. That's why mind wash. The point, see, people they have positioned him as a macho hero. Yeah. Does he fall in the category of macho hero? Yes, he does. Okay, for you, yeah, because you're brainwashed already, right? No, not really. He does. For many people, he अभी आपने जो बजाया अर्जुन कपूर को उसने ही इंस्पायर किया और उसने ही पुश किया. Like he told him to work out and try acting. So you should know like many other things. So he is macho physically and he is macho in many ways in many people's lives. So I want to ask you, so macho for you is a physical attribute? I mean, नहीं, not just physical. मैंने अभी बोला ना, macho in the sense of his क्या बोलते हैं impact on people's lives and also macho in terms of physical also. जो मतलब बॉडी बिल्डिंग उसने बहुत जल्दी मतलब बॉलीवुड में वो नहीं था पहले ट्रेंड. बाद में him and Sanjay Dutt started that kind of trend. So if you were to say a nice macho song, you would definitely pick Huda Huda Da Bang Da Bang. हाँ वो तो full on. Okay, I'll definitely play it for you. How about that? Happy? Thank you. Will you go happy that way at least? Will you calm down and not take it too personal? हाँ बोलना. बोलना. Okay, good. That's she took it personally. I know Deepa takes it very personally. Especially whatever I say, she gets angry with me. I don't know why. So see, she says a man is macho for her if not only he should have the six pack or whatever. What if it's concealed? Wait. Should he have a six pack or should he have those big biceps, broad shoulders and big biceps? And also he should have a heart. Like you can other there are some other heroes which didn't who didn't have the six pack पहले, लेकिन they were macho enough to have that impact. How? Who? Name a few. वो song जो मतलब एक गाना है जो सारे men को दिखाता है वो गाने में. The title song. It's I think same music director and same everything. कौन है भाई? पता नहीं same है कि नहीं मुझे पता नहीं. कौन सी गाना बात? Omkara title song. Omkara title song is also similar to in the similar lines of Huda Huda Da Bang. Yeah, correct. Well, we'll come to that. We have many more songs that way. In fact, Indian cinema has peppered so many songs which are macho songs, right? उसके बारे में बात करेंगे. But for you, you're saying your take. I mean, I don't think Ajay Devgan, Saif Ali Khan, none of them have six packs.
but their character and the whole movie theme is like that. Yeah, good. Very- So, no, I yeah. just asked you because it doesn't have to be somebody has to have 6 packs for a Yes. macho No, kind it of a song. doesn't have to be. Okay, good. So, Right. I'm going to play a nice song for you, Deepa. You'll enjoy the song. Okay? It's from the movie called Tevar. नहीं कुछ भी अभी क्यों आज अर्जुन कपूर को क्यों पता नहीं वो इसमें तुम्हारे सलमान माचो- खान आता है, इसमें हाँ। सलमान खान आता है। देखो गाना सुनो सुनो दीपा, सुनो नहीं डरता किसी के बाप सी दीपा टोटल माचो सॉन्ग इसमें उसका 6 पैक भी नहीं है। या इसका ये बाप रे वो But अभी आएगा ना? he's married to the sexiest, fittest looking woman in the industry. Oh, already married, Or huh? not married, अच्छा, whatever. कुछ नहीं, Almost. कुछ नहीं। Supposedly. he's married already Supposedly. Almost on the verge. Deepa got disappointed. नहीं I'm not doing So, Deepa, suno. This is what I I want mean, you to just listen listen to to. this portion. मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन सलमान का फैन देखा उधर भी क्या चापलूसी कर रहे लोग यार सच्ची में इसीलिए फिल्म वाज अ फ्लॉप एक्चुअली दे मालूम है क्या हाँ। उसको मालूम था भाई से पंगे नहीं लेने का उसने ले लिया ना भाई की जो क्या भाई से थी तो पंगा भाभी लिया। थी उसको चुरा लिया भाई उसने की भाभी को ही ले लिया हाँ एग्जैक्ट लेकिन नहीं इसलिए पंगा ले लेना उसने No, but you know what they say? Like Deepa was saying, right? A kindred, a compassionate soul. This guy is supposed to be very compassionate, so and sweet. he listens and Good listener. he's a good listener, and apparently he was there for Malaika Arora without any strings attached. So sweet. When she was going through a hard time with Arbaz Khan, and Arbaz Khan Okay, had we an don't affair. want to go into today's macho Mondays for 30. We don't want That's to talk macho about according to women, Gossip Altu Baba. Gurwar. No, Okay, right. okay. Deepa, isn't that macho We when a will man talk- is there for you? Yeah, we'll talk about later of Althani because I have a lot of points to bring at the time, but we'll talk about later. Like Deepa, thank you so much for calling us. This song is dedicated to you specially, okay? Okay? ठीक है Okay, चलो thank you bye Keep listening. झूले में पंगा कर दूं मधान मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन झूले में पंगा कर दूं मधान मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन झूले में पंगा कर दूं धड़ाधड़ देते हैं सुन के हम नहीं लेते हैं है कोई तो होगा अपने घर में वो नवाब घर जो पानी मांगे जो पूरी खातिर करते हैं बड़े खड़े छोटे कर देते हैं सारे हिसाब वो सीधी सादी अपनी आशा प्रेम प्यार की बोलो भाषा जान के कोई ना समझे तो करते हैं तमाशा आया हूँ मैं पर्दे फाड़ के हाँ आया हूँ मैं पर्दे फाड़ के जाऊंगा झंडे गाड़ के मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन झोले में पंगा कर दूं I'm a superman. Hi, I'm Arjun Kapoor and you're listening to me on Radio D-Hockey, where the entertainment does not matter. क्या बोलती थी ए क्या मैं बोलूं सुन सुना आती क्या जीजीसी में क्या करूं आंखें में जीजीसी में अरे नाचेंगे गाएंगे बंदूकों मिलेंगे ऐश करेंगे और क्या ए क्या बोलती तू ए क्या मैं बोलूं सुन सुना आती क्या जीजीसी में क्या करूं आंखें में जीजीसी में अरे नाचेंगे गाएंगे बंदूकों मिलेंगे ऐश करेंगे और क्या ए,
क्या बोलती तू? ए क्या मैं बोलूं? लॉकडाउन की सीजन में दीदी सी जाके क्या करना? लॉकडाउन की सीजन में ही तो मजा है मेरी मैना। डरती हूँ कोरोना से कहीं लग न जाए मुझको। मास्क पहनेंगे निकलेंगे पागल क्या समझी मुझको? क्या गाऊं समझ में आए ना? क्या पहनूं मैं तो ये जानूं ना। चल मैचिंग करते हैं, मैं आगे तू पीछे, बस अब निकलते हैं और क्या। ए, क्या बोलती तू? अरे क्या मैं बोलूं? फालतू बाबा से मिलेंगे, टोमेटो राइस खाएंगे, फालतू रानी से बात करके रिफ्रेशमेंट हो जाएंगे। मैं तो कब से तरस रही थी स्टूडियो में जाने को। पम पम करके निकल पड़ते हैं फिर डरना काहे को। फोन घुमा रेडियो डिहाडी को जरा बोल, बाबू मोशाय आप भी आओ वहाँ। गाना भी तैयार है, खाना भी तैयार है, सोशल डिस्टेंस भी है क्या? ए, क्या बोलती तू? You are listening to Radio D Hotties, powered by Mahima Creations. जब हमारे परिवार के बुजुर्गों की सेहत और देखभाल की बात होती है तो घर पर इन होम केयर वाला ऑप्शन सबसे बढ़िया है। ऑनलॉक का पेस प्रोग्राम एक ऐसा कन्वीनियंट एंड पर्सनलाइज्ड ऑप्शन है जिसके जरिए हमारे बुजुर्ग घर पर हमारे साथ रहकर यही देखभाल और सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अब चाहे वो घर पर रहे या ऑनलॉक वाले पेस सेंटर में आए, उनको वही डेडिकेटेड एंड प्रोफेशनल केयर मिलेगी। ऑनलॉक ने बुजुर्गों की सेहत को अपना प्रायोरिटी बना लिया है। और जानने के लिए 1855-308-0195 पे कॉल करें। That's 1855-308-0195। Radio D Hotties, the best and hottest Indian radio network in the entire world. Mahima Creations. Proudly presents Premier Evening Drive Time Show. Bam Bam! Yes, you heard it right. Bam Bam! Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Let's beat the traffic. Bam Bam! Bye-bye. नमस्कार, नमस्कार, वनक्कम, हर्षामदीन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, मेघांतरिकी वंदनमु, जय स्वामी नारायण, जय श्री कृष्ण। जय सुरेंद्र। वो क्या था? सुनील शेट्टी का स्टाइल। खामोश। अरे शाम को बोलना छेनो आया था। क्या? क्या? What is that? You know that? No, I don't know. Dialogue of Shetty Gachina. Oh, okay. Okay, आगे बढ़ो। जय जिनेंद्र। हाँ, और क्या? जय हनुमान। I don't know. I forgot. पतिचान। हमारे इस्माइली भाई बता यानी मदद, मौलानी मदद बोलते हैं फीजे बंदरे बोले क्या नीसा बुला पर जान हम आ गए हैं आपके प्यारे महिमा के द्वारा मसवाल तो पाप 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 पाप। और मैं आपकी डार्लिंग प्यारी फालतू रानी बंदू जानी। यस बंदूजान, आज है माचो मंडेज। हम लोग ऐसे माचो गानों की बात करें आजकल ऑन एयर बंदूजान जिसमें टोटली माकिस्मो है, मतलब द माचो पंथी इन ऑल दी सॉन्ग्स बंदूजान, राइट? एंड काफी सारी बात हुई एंड ऑफ कोर्स दीपा जी बहुत ट्राई किया उन्होंने अपना कैंडिडेट को घुसाड़ने के लिए, लेकिन फाइन विल प्रोबेबली टेक इट। मीनाक्षी भी बात बोल रही है नहीं नहीं डेफिनेटली आते हैं कैटेगरी में।
मीनाक्षी जी, I know you all have been brainwashed, but doesn't matter. But गानों की बात करें तो डेफिनेटली बनता, राइट? हाँ. एक गाना बताओ फालतू टोटल मैकिस्मो वाला गाना बताओ. हाँ. लगाओ. हाँ. लगाओ कि नहीं? हाँ, लगा. हैं? लगाओ. बलजान, ये गाना सुन के ना आह, काफी सारे लोग हाँ. क्या काफी सारे लोग क्या करेंगे? hey, oh no, ये नहीं. I was going to talk about this song. Yes. आएगा बलजान, थोड़ा देर में आएगा. आएगा. माचो वाला गाना आएगा. हेलो, नमस्कार, आपका हर स्वागत पैम पैम में. मर्चेंट साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर. क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज कट के आ रही है. Yes. हेलो. आपकी आवाज कट के आ रही है. Can you please call us back again with a better line, sir? आपकी आवाज जो है मैं आ रही है लेकिन कट के आ रही है. It's coming like in bits and pieces. If you can please give us a call back again. एक और बार ट्राई कीजिएगा if you don't mind. Thank you, sir. Sorry, Balajan, we had a little bit of a disturbance in his voice, so request him to call back. जब तक तो कॉल कर ले फालतू नहीं. लगा दूं क्या गाना? Yes. Total swag वाला गाना. Yes. Enzai. Oh. You better put your fist up, right now. क्या? One for the trouble, two for the bass. King is in the place, you better watch this space. One for the trouble, two for the bass. King is in the place, you better watch this space. लेके तेरा मस्त लेकिन सबसे मस्त है किंग. बेस भी हम है, बेस भी हम है, और जिगर में है स्टेयरिंग. Put your fist up, put your fist up, put your fist up, put your fist up, put your fist up. कौन सा मालूम है गाना फालतू? Of course. Yes, फालतू come back to that song. Sing is king. लेकिन अभी हमारा कॉलर है किंग. नमस्कार मर्चेंट साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान, मालिक का बड़ा आदर दे. वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच सर. हाँ तो सर, आज माचो मंडेज में आपने कॉल किया है. एक ऐसा माचो वाला गाना बताओ, उस जमाने में क्या बहुत चलता था? वो चलता ये था. हाँ. बोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे. टन टन टन. बोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे. वेल सर, थैंक यू सो मच. आपने एकदम ऐसा पॉइंट पे हमें नोटिस करके बोला फालतू नहीं. उस जमाने में फालतू, there was no concept of macho song as such. There was no thing of actually अपना डिंडोरा खुद पीटना, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे उस जमाने में. Yeah. It was considered to be bad to be, being very proud and talking about yourself. Oh. Yeah. How is this a macho song? It is not a macho song. ये माचो गान था बिल्कुल. हाँ सर, माचो गान था ये. नहीं, ये तो विमेन बैशिंग गान था ना. हाँ. हाँ. माचो गान थोड़ी था. माचो मतलब एकदम मर्दानी वाला गाना. नहीं, ये बड़ा जबरदस्त गाना था भाई. सर, माचो गाना ये होगा. गाना है. आप अभी भी सुनो, ये 40 हाँ, ये सदाबहार गाना. नहीं सर, मर्चेंट साहब, क्या गाना है? मर्चेंट साहब, ये सदाबहार गाना है, मैं मानता हूँ. लेकिन हम लोग आज बात करें ऐसे गाने जहाँ पे एकदम क्या बोलते उसको, मर्दानी वाला गाना एकदम हो. Even that time there were ganas, man. वो क्या? हाँ, एक गाना है ना अजित. सरकटा. नहीं, वो गाना है ना दिलीप कुमार एंड अजित का गाना है ना, एक साथ में गाना. ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मतवालों का, ये देश है प्यारो हो. मस्तानों का. ऐसे वाले एनर्जेटिक गाने जो बोलते हैं ना, माचो वाला गाने ऐसे. तो वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच. आपका एंट्री ले लिया हमने, लेकिन सोच के वापस कॉल कीजिएगा फॉर श्योर. अगर ऐसे मस्कराम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे. हाँ, दैट इज केयरफ्री गाना. माचो गाना नहीं है. हजार दे, चाहे कोई खुश हो, चाहे गाड़ियाँ हजार दे, मस्कराम बन के जिंदगी दिन गुजार दे. वेरी गुड सर. मस्त राम. वेरी गुड सर, थैंक यू. देखो सर, यही हुआ ना एक्चुअली. थैंक यू फॉर कॉलिंग अस मोहम्मद साहब. आप सुनते रहेगा, बिकॉज देखो फालतू ही ब्रॉट अ वेरी गुड पॉइंट व्हाट वी टॉक्ड अबाउट अ फ्यू मिनट्स अगो, पिछले आवर में एक्चुअली, दैट द फैक्ट दैट द कांसेप्ट ऑफ माचो हैज चेंज्ड. There was a time macho was concept like how Mama Machas have talked about, right? The Mastadam ban ke zindagi ji le, right?
People like, people talking about people who are happy-go-lucky kind of a concept. हाँ. That was a liked concept of that time. हाँ. Right? हाँ. लेकिन बाद में आ गया एक्शन डिशुम नाके अभी आजकल ये हो गया माचो सॉन्ग. और जिगर में है देखो somewhere in 2000 तक आने तक, right? Daring became a macho panthi, right? लेकिन सब में बस एक देश भी हम हैं, देश भी हम हैं, और जिगर में है हम करे दिल की जो मर्जी, करते करते बस हद कर दी, दिल अगर सच्चा हो अब सब कर दे सच्ची. Sing is king, sing is king, sing is king. Sing is king, sing is king, sing is king. Sing is king, sing is king, sing is king. Sing is king, sing is king. प्रीतम बाग कॉर्पोरेशन बदजान हार्डकोर का रैप है. Cause I hit you in the face. You know you better salute to the king. You know you better bow down to the same. Chuck the botte cause we are the greatest. Kabhi na darte cause we are the bravest. Nachte hasse bad as hell. Punjabi's in the house, you better watch yourself. मीका सिंह का आवाज बदजान and written by Mayur Puri. दिल किसी का जो अगर तुम जीतो दिल तो की गल है, दाग लो 10 बंदूकें, बोल ले फिर भी भूखे, गल समझ पाओ उनकी बोली को फिर तो की गल है. आओ दिल का राग सुनाओ, ओ ओ ओ गाओ, हंसना गाना माने चूहे. Sing is king. तो पादोनी हम बता दो कि आज how do you define a macho song according to you, Faltwani? That is totally about like Altu Baba is peacocking. Excuse me, I am Sher. I am like Singh King. तो peacock है. We don't have to, Faltwani. हमारे चाव में ही एकदम वो है swag. And Balajan, actually बहुत सारे ऐसे गाने हैं which actually talks about these things. Oh, that's another. Salman Khan ka fan. Oh my God. Please, I doubt if. I think you're a closet fan of Salman Khan. I'm not. I was. My friends Did are I talk Salman about Khan that? fans. Your Be quiet. friends? Who are your friends? My bandus are Salman Khan fans. So? Deepa, Meenakshi, all those people. Listen, I am a Salman Khan fan, right? Why do you guys discount me as a Salman Khan fan? You're not a Salman Khan fan. You're a November 2nd fan. That's all. You're a fan of only yourself. Okay, Or Fatwani. Now fellow I Scot- can't help it if at all Salman Khan has a few qualities of See, me in him. let me tell you classic example, Panjan. Aishwarya Rai. For me, she has no talent. Sorry, I don't find her beautiful either. I don't find anything interesting about her. Neither does Altu. I know, but because she's a Scorpio, he'll support her. No, I never said that. Yes! I have always tried to be Whatever. objective. I've always told that if she'll take some acting classes, probably she'll do a better job. What? Seriously? Yeah, right. I really don't mind if even if Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan come You and know take what out he a scene. explained to me, Panjan? He said, look how business savvy she is. That's what he told me. As soon as I said, she Now- can't dance for dance. Look at the way she dances. The way she You dances is so gotta give no it to her, grace father. at all. She actually is business He's like, savvy. oh, she's very business She savvy. was- Look at her PR strategy. Look at the propaganda. How well she did. Oh my She goodness. did. Finally, did you know what happened? Yeah, She was the finally. highest tax-paying lady in the country. I admit it. And- no problems. No. I agree, Altu Baba. There's nothing wrong with that. But I'm just saying that you are just a fan of Scorpios. That's all, fellow Scorpios. And also, you're not a fan of Salman Khan. 100% I know. No, don't say that, Faltwani. I've always appreciated when he does a good job. See, I'm not a person who can. Yes. I cannot do chaploosi of Salman Khan. Sorry. I'll tell you- If I'll Salman tell Khan calls up, I will not do chaploosi. I will tell him exactly what I feel. I'll share my 2 cents. Unfortunately, Faltwani, that's my macho charismatic. That's a macho panthi. I don't like to hold off. I see it. I call it the way I see it. Is there anything wrong with that, Faltwani? Please tell me. I think it's a quality. It should be a quality in all. Well, I've got to hand it. Yes, only one movie, which I liked him in 2 movies, Salman Khan. Bajrangi Bhaijaan changed my opinion about Salman Khan. Second movie that completely changed my opinion was Tube Light. His I liked acting, his acting, not his personal opinion. No, personally, I really like the fact that he, in the Being Human Foundation that he founded, no matter what, if people actually go there and look up my posts on Facebook, they'll know that they'll think I'm a Salman Khan fan. I'm not.
I'm not. Well, that no, When कोई everybody- बड़प्पन नहीं है कि बोलना कहाँ है. But anyways, Father, we have a caller waiting. Lincoln, go to them, please. Go. I would like to take their opinion. Your opinion always is there. Go. हाँ. नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है पैम पैम के माचो मंडेज में. Hello. हाय पैम पैम। हाय हाय मीनाक्षी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आप दोनों बताइए कैसे हैं? मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ, इसके बारे में तो ये है सुपरमैन, सलमान का फैन. नहीं यार, दो बाबा कोई सलमान खान के फैन नहीं है। नहीं, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ. हाँ हाँ हाँ। Hello, what is this, Meenakshi ji? Why do you say I'm not a Salman Khan fan? Sorry. Why do you say I'm not a Salman Khan fan? I want to know. Nation wants to know why you say Altu Baba is not a Salman Khan fan. Please, ये बता दो हमें. Clarity, आज clarity दे दो. क्योंकि दीपा वाला गाना नहीं चलाया ना, so that shows that you are. अरे मेरे को दीपक को चिल्लाने में मजा आता है. अच्छा, लेकिन I know. See, is that the only reason why you think I'm not a Salman Khan fan? नहीं. There are many reasons because you are November 2nd born. तो मतलब you mean say so you mean to say I like quality? मतलब क्या आपका? You think I'm very quality conscious? Is that what you're saying? No. Then hello. I'm saying that you are more leaning towards November 2nd born. नहीं ऐसी कोई बात नहीं. नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं. दीपा of course, दीपा भी देखो एक्सप्रेशन दे रही है आप पे. one person will get very बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हमारा शो सुनेंगे तो. कौन? सलमान खान नहीं. हाँ. ना ही शाहरुख खान. कौन? आमिर खान. मेरे बारे में तो कुछ बात नहीं करता. Only two Khans we are only discussing two Khans. No, now we're talking about Kumar. We're talking about Bhatia, Punjabi. Right now. Akshay Kumar. Akshay Kumar. We talk about Akshay Kumar. We also got Arjun Kapoor की बात की हमने. Yeah. और बाकी है यार. मतलब आज तो मेरा टॉपिक. हाँ बोलो. हाँ, तो मैं तो इसलिए कॉल करा था कि एक और माचो सॉन्ग है. हाँ. वो है हमारे अजय देवगन साहब का. हाँ. सिंघम का टाइटल ट्रैक. Exactly. That's exactly what I had lined up But next. Deepa will say Singham, he's not at all macho. Why? She'll say that. I know for sure. Why Deepa, I did know what Deepa Deepa will say? say that. So it's not about just body, right? हाँ, Deepa only about body. ना? It's about the traits he has during that movie. हाँ. कि कैसे एकदम daring है. ये अच्छा by और the way. जाके एकदम विलेन की den में जाके एकदम हाँ. blast करता है. See, I'll tell you what. You brought a very good point, Meenakshi ji. जो people, especially Deepa, are misunderstanding. I have nothing personal against his actors. We're only talking about macho panti of the character or the role or the song. Yeah. Right? Yeah. Like something which talks about the particular courage, the thing, and also and blowing one's own trumpet. No? That kind of stuff. That is macho panti. Very good. Yeah, and we're asking you what is macho according to you. हाँ. आपके लिए क्या है? हाँ, मैंने बताया ना कि it's not just about like physical appearance of the person. कि उसमें उसकी like अंदर से daring कितना है और क्या चीजें वो कर सकता है. So it's nothing to do with physical appearance. Very good. So how determined he, like how his determination, his determination and other qualities should be also there. Yes. Deepa, देखो सुनो इसकी बात मानो. देखो, it's not about the six pack. Hey, she told. नहीं, उसने खाली ऐसा ही नहीं बोला. मालूम है, लेकिन हमें जो इसको मरोड़ते हुए बताने में क्या मजा आता है मालूम है? Unnecessary, आप तो मरोड़ कर facts को पेश कर रहे हैं. अलग ही मजा है इसमें. मैं बताता हूँ मीनाक्षी जी, इज वेरी वंडरफुल. अच्छा, बाय द वे, वेरी गुड. तो आप बताओ कि एक ऐसा गाना बताओ, अमिताभ बच्चन का माचो वाला गाना बताओ. अमिताभ बच्चन का? हाँ. तो वो गंदा सा गाना है. मुझे सबसे पहले वही क्लिक करा है, वो टांगे वाला जो है गाना. मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला. दुश्मन क्या मारेगा, मुझे मार दिया सुनने वाला. क्या बोला? गाना को सुनने वाले. Hey, but actually, if you look at it, there's one way you can look at it. Otherwise, Don का रे दीवानू मुझे पहचानो. Ah, exactly. And that's one thing. That's a total macho song. And I kind of put the category of macho, like, where Amitabh Bachchan changed. I think Amitabh Bachchan only. He was the person who brought in the concept of the comedy hero. Because Dharmendra ji had brought the action hero concept. He kind of moderated comedy hero. Because if you look at it, right, एक गाना है ना वो क्या अमर अकबर एंथनी में गाना है ना. My name is Anthony Gonzalez. I would put it in the category of macho Gana. Yeah. What? He's totally blowing his trumpet there, man. Asking the girl out also, by the way. No, man. Yeah, man.
Oh, No, that is not a macho song. Think about it. सुनो गाना फादरानी very good at this. फादरानी लिरिक्स उठाओ. Hey. गाने के लिरिक्स उठाओ ना वहाँ पे गूगल दिल पे. भी है खाली, घर भी है खाली. हाँ पिकअप किया ना. जिसमें रहे. कोई किस्मत वाली. जिसमें मेरे याद आए जब चाहे चले आए. रूपनगर. प्रेम गली गली नंबर 420. Excuse me, please. Exactly. देखा वो सूम में लड़की उठा लिया उसने और अपने बारे में खुद बोल भी दिया. सही है ना? तेरे हिसाब से वो macho है. I would call it a macho gun because I tell you because the concept of macho has changed over a period of time, right? But next ji, don't you agree with me on that? हाँ, yeah. Because एक ज़माने में comedy like किशोर कुमार का character जो था ना, that was considered to be a man in demand kind of a macho kind of a situation, right? हाँ. Then afterwards it slowly became like the sentimental hero. सब क्या click sound आ रहा है? Oh, sorry. तू सही में मैं सोच रही थी. Sorry. मैं पेन पकड़ के मैं क्या क्लिक कर रहा है कोई फोटो निकाल रहा है. I was going to smile at the camera. Anyway, that's fine. The thing is, I think that's why I feel that even that song of Amitabh Bachchan will fit into a macho category. I don't know. I might be wrong. But just I'm not like Deepa. I accept if I'm wrong. It's okay. Oh God, Deepa. वो अभी दोबारा कॉल लगाएगी. Hey, Deepa, he's not all. This I'll have to back him up because he's not all over the place. We're talking about the definition of macho. Wait. No, she thinks I'm Sarvat Punjabi. Okay, I understand. Wait. Sarvat Punjabi थी. कुछ भी. What? She. चुप. Okay. मैं तेरे को डिफेंड नहीं Okay, fine. तू बात कर. Okay. मैं को नहीं करना है. Okay, बोल. We're talking Bold, about darling. how the definition of macho has changed over time. मीनाक्षी जी इतना गुस्सा छोड़ दो. नहीं मीनाक्षी जी हमारे साइड में. वो बेलन ढूंढ रही है. बेलन ढूंढे तो चलेगा. तो बेसिकली क्या हाँ तो माचो पंती जो है we're talking about how over time we're not talking about just the hero. We're not the talking hero. about the character of the hero that the hero has played. The concept over of macho. time, the concept of macho. The Salman Khan concept was brought in by Deepa because she thought macho Mondays means macho heroes of Indian cinema. It is not macho heroes. The it's one line she characters. put on the Facebook is what got me riled up totally. What line? did Oh, she put? all Salman Khan today. But Salman Khan was fabulous in Tiger Zinda Hai. Believe me. अरे मैं मीनाक्षी जी मैं मानता हूँ. That's why I don't understand why you think I'm not a fan. Let me tell you something, Altu Baba. One thing, right? I have a feeling that when Salman Khan comes on the screen, right? The image that has been built of Salman Khan, Meenakshi ji, correct me if I'm wrong. Most people like that is because for some reason you feel he can handle any situation. जो भी story का script है, कि whatever happens, you somehow like automatically, whether regardless of script, जो भी script है, you'll know that Salman Khan will come through. भाई है. That feeling you get when you see Salman Khan. That's true. Whether whatever role he portrays. नहीं मैं मानता हूँ लेकिन देखो 100%. मीनाक्षी जी कुछ मैं दीपा से पूछा एक बार ऑनलाइन आई तो I said do you take it personally if I say something bad about it? She said no, but right now she's not even going to call it seems. I'm not going to call बोल रही है मतलब personally हम कुछ ले लेंगे at least मैं तो personally कुछ नहीं लूँगी because there are so many things which I don't like about Salman Khan. Correct. So I'm gonna criticize him too. Very good. That's what I do. मैं उसको praise करती हूँ तो I have a right to criticize him. Of course, yes. ये तो आप बनता है यार लेकिन देखो I don't know why you and Deepa and this one also Faltoni decided I'm not a fan of Salman Khan. we're not talking about Salman Khan. विषय से मत भटको. आज माचो मंडे से. Exactly, it's not about Salman Khan. हाँ छोड़ो Salman Khan छोड़ो. That's why I said one fit in this category. But anyway. एक चीज बताओ simple fact. हाँ बोलो. तो मेरा first dog था उसका नाम हमने माचो रखा था. Oh, sweet. Yes, because you know, I don't know if you know, Macho Man Randy Savage करके एक WWF का वो मर गया ना? He's there, no, he's alive. Randy Savage, alive? but he's very badly sick or something like that. Yeah. Oh, yeah. But yeah, he was a WWF thing. Why you like the guy also? Is it? No, man, I had heard of that. I've never watched. Yeah, he's like the total. Yeah. My rascal brother used to act like that. So, oh really? Yeah. He must have been a savage already, right? Yeah, he'd climb up on top of India में वो ना wooden cots होते हैं. He would climb up on top of the wooden cot
and then jump down when I'm unsuspecting, I'm reading a book or I'm doing something, right? He'll jump down and he'll like, it's what, drop kick kitchen. He'll use his body elbow. slam. It's called a body slam. And he'll use his elbow and he'll do that It's like a that. body slam. He'll say that is Macho Man and Randy Savage, it seems. Whatever. Like, I'm like, oh God. Whatever. Fuck it. You have no Okay, idea. how much it don't hurts. listen to watch it. I don't know. Today's not a show about you, Faltwani. What is this? Yeah, always make everything about yourself. Today's about macho Mondays. I was talking about Randy Savage. But मीनाक्षी जी आपका कॉल है अच्छा लगा. दीपा जब कॉल करती है तो भी अच्छा लगता है, लेकिन देखो अभी कॉल नहीं करने वाली बोल रही है. नहीं वो करेगी करेगी? Are you sure? इतना यकीन है आपको उनके पर? दीपा तू कॉल नहीं करेगी तो आलतू कर देगा तेरे को. ट्रॉफी में तू नहीं करेगी कॉल आ जाएगा. But thank you for calling. आपका गाना डेफिनेट लगाऊंगा, ठीक है? ओके हैव अ गुड वन. बाय. बाय. नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है पैम पैम के माचो मंडेज में. मर्चेंट साहब, आप थोड़ा वॉल्यूम जो है बैकग्राउंड में कम कर दीजिएगा, वरना वी हियर अ फीडबैक. मैं बाहर आ गया. हाँ बोलिए सर. हाँ बोलिए सर. है ना मेरे ऑनलाइन टूटे हैं? कौन सा गाना? क्या टूटे? अट्टी बंदी है ना वो इसमें है अभी तक है सर आप सर आपकी आवाज कट रही है थोड़ा. आप आई डोंट नो व्हाई क्या हो रहा है. तो अगर Probably शायद सिग्नल कम है जहाँ पे आप खड़े हो, थोड़ा मूव कीजिएगा. यू कैन पॉसिबली गो बैक टू वेयर यू. हाँ तो गाना भी बड़ा प्यारा है. कौन सा वाला? मेरी टूटे अंगड़ाई. मेरी टूटे अरे कुछ है. ओके. I'm not able to recognize the song, but अगर मिल गया तो डेफिनेटली प्ले करूंगा, ठीक है? अंगड़ाई मेरी टूटे ना. हाँ. वो माचो का से हुआ. मालूम नहीं मेरे को. माचो लोग अंगड़ा लेते हैं क्या? हाँ लेते हैं कभी-कभी ऐसे करके. हाँ. But thank you so much sir. आप सुनते रहिएगा. एक अच्छा माचो वाला गाना लगाऊंगा फालतूनी. हाँ बोल. ए आलतू. Yes. जो मीनाक्षी जी ने बताया ना, that particular song from Singham, that is also that is filled. जैसे तू माचो बोल रहा है, right? You're talking about songs that are depicting characters that kind of pump up the testosterone. Correct. You're right. Yeah. जो ऐसे लगता है कि कुछ भी हो जाए, Exactly. दुनिया जाए तेल लेने, ऐश तू करता है. Not that way. Nobody should take panga with the person. That's it. Yeah. So, है ना मालूम there है. are a lot of songs. Even my Ranbir Kapoor has a song like that. No way. Yeah. That guy doesn't have any kind of. Unfortunately he dropped his stuff in the first movie itself. That's why nobody thinks of him as a macho guy. I'm also not going to call Deepa. Don't call Deepa. I call you. No, I'm saying I said call comma Deepa. But Meenakshi ji, आपने जो वो गाने का रेफरेंस किया था? Hey Deepa, you love this song because in this you can see his six pack. Boom. जब खबर उठे के अब सिंघम ना मगर चले बस कहर चले जब अब सिंघम बुरों को खींच के धूल नीच के रह पड़ जाए भलों को खींच के बाहों में बीच के जब भी मिल जाए न किसी से ये कम बड़ा इस बेहदम नर सिंह है ये सिंघम. और फालतूनी खुश था तू खुश है ना फालतूनी? हाँ मैं बहुत खुश हूँ. वेरी गुड. तो अभी मेरा गाना सुनो. Actually हाँ. आगे बढ़ो. गाना नहीं लगा रहा है? क्या बोल. नहीं मैं वही बोलने वाली थी कि I think when you talk about the image of macho-panti, right? बोल. You're talking about in our minds, or is it in the mind of the viewer, or is it in the characters that are displayed on screen? Hey, all. Okay, so All. I think a lot of it's almost inextricable when it comes to certain heroes. Wait, right? before you do all those things, please send us a thesaurus to everybody, a free download if possible, of what are the words to use.
क्या word use किया? क्या inextricable trouble? Inextricable. How hard is it to understand It's a that? trouble for us. हाँ. बोल आगे बोल. हाँ, what does it mean? तो कुछ लोग मतलब सेपरेट नहीं कर पाते हो. हाँ. वो हीरो का जो इमेज है और जो जितने कैरेक्टर्स उस हीरो ने निभाए हैं लोग उसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं. दैट्स पार्ट ऑफ द रीजन व्हाई आई थिंक पीपल फेल्ट ट्यूबलाइट वाज they refused to let accept Salman Khan in the role of somebody who is not macho in that movie. That's because of the absolute क्या कहते हैं blind worship of the hero macho image, right? क्योंकि ये इसको भी ना ये बंदा ये कुछ खास नहीं है. Quite frankly, Ajay Devgan is not so handsome, not so muscular or anything like that. He looks lean and mean, but he's not like one of those kind of figures. But the roles that he's portrayed and just that intensity, like the way he looks, that and the quiet stillness in his thing and the roles that he has portrayed, people somehow feel okay. Ajay Devgan hai to macho hai. Yeah, so that thing that this is the kind of person in whose arms you'll feel safe. Oh, whose arms? You know what I mean? No, I'm serious. He'll suit like a protective father's role. He'll suit a police officer's role. He'll suit a good-hearted baddie kind of role. Every kind of role. You know what I mean? Yeah. So correct me if I'm wrong. I think that's what their image of macho is. Wonderful, Faltani. क्या तू सही में सबमिशन पे लेके आ गई तू वहाँ पे, right? Very good, Faltani. I'm very impressed. गाना ऐसे बज गया background में पूरा. You blame her, because I was playing the song, she was having the song to go all the way fully. So I played the song full though. Very annoying, na Banjan. Welcome to our radio show. This is Radio D Hotties, and this awesome dude this is character is Altu Baba and myself Faltu Rani. हम लोग आपके सामने लेकर आ जाते हैं एक और drive time that's totally exciting and totally mastani every single day of the week, 5 to 7 p.m. And हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप सुबह morning drive में quality programming sunna chahte hain with some good quality information and want to catch up on the news headlines and want to get something which is very unique to our show called the ABCT every day. That's called the Altu Baba conspiracy theories about political stuff, and a lot of times, Banjan, his conspiracy theories turn out to be true. Yeah, that's why Putin actually has got his ears on our radio station. Oh wow, he's putting it here. So you can definitely tune in 9 to 10 a.m. every morning. We're on from 9 to 10. A good morning bay करके हमारा एक show आता है. And if you want to advertise on Radio D Hotties or Radio Mirchi or want to be able to get your message out to our bandhus, all you need to do is call us 408-660-6753. Again, 408-660-6753 or email us on bandhu bndhu@mediamahima.com या Facebook पे देख रहे हैं तो हमें एक मैसेज भेज दीजिए through our Facebook page and we will get in touch with you. facebook.com/Radio D Hotties. सुन पाम 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 सुन पाम 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 जो झुंझार होते यार वही सरदार सलागे सुन पाम 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 हार को काटे तीर धरे सन्नाटे जब वीर भरे हुंझारे सुन पाम 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 अरे मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे सलमान खान के फैंस लोग अभी खुशी त्योहार मना रहे होंगे या उनके कलेजे को ठंडक पहुंच गई बलजन, बिकॉज सलमान खान का गाना आ गया. अगन बरसावे रे वो ठंडी पवन बन जावे रे जो सबका भार उठावे रे वो ही पवन जब घड़ी कठिन सी आवे रे वो झट से सबल बन जावे रे जो सबको पार लगावे रे वो ही दबंग धार को काटे रे तीर धरे सन्नाटे रे जब वीर भरे
Bajan, ये गाना आपके लिए था and I hope you enjoyed the song Bajan. आगे बढ़ते हैं फातवानी. How about some more Ghana song which are like total machismo kind of songs? Correct, yes. लगा दो क्या? लगा Altu, एक और machismo वाला गाना है where the macho image kind of changed. What? तूने बोला metrosexual image, right? Yes. लेकिन 2000 में it ushered in a new era of a highly educated, corporate, free bird kind of image. Which was very macho also. What? Yeah, the couldn't care less. I'm a free bird, I'm going to do what I want to do. Oh, really? Yeah. Koi kahe kehta re. That is a macho song. Bakwas. Where do you get this kind of thoughts, Fatwani? Please, come on, what is this? Okay, fine. If you think it's a macho song, it's a macho song. Don't you think it is? Don't you think at one point people were like that, where they're like, हम लोगों की ठोकर में है ये ज़माना. Oh, shoot. So that's true. I agree with you, Fatwani. Macho song. Oh my God. Yeah, I agree with you. It's a, I thought, okay, it's a macho song for sure, Okay, yes. never mind. The metrosexual macho song. Yeah, लगा दो क्या Fatwani? Never mind. But you know what the macho song is, Fatwani? Okay, play Alto Baba. Oh my God, something took it very personal right now. Yes, I'm not going to call you. Good, Deepa, good. Tantana, 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 tantana. बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश. Hello, नमस्कार. आपका हार्दिक स्वागत है माचो मंडेज में. Who's this? Hello. नमस्कार, दिस इज माचो रंजीत भाटिया. ओए हाय रंजीत भाटिया जी, कैसा है आप? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक. हाँ, बताए सर. मुझे दो गाने याद आ रहे हैं. हाँ जी. एक तो भाग मिल्खा भाग मिल्खा. That's very true. That's a nice song. Yes. और दूसरा है वो देसी बॉय. हाँ? Make some noise for the Desi boys. हाँ, Whoa, that also is a whoa, thing. But भाग मिल्खा में एक और गाना एकदम टोटल मेरे हिसाब से माचो गाना कौन सा गाना है? मस्तों का झुंड. मस्तों का झुंड. वो तो मेरा फेवरेट गाना है. Yes, मस्तों का झुंड. I think total very good sir. अरे सर आपने तो सही बता दिया. आप और हम एक ही बिरादरी के ना, क्या करें क्या? सोच मिलती जुलती है. हाँ, क्या आप थोड़ा मेरे से इंटेलिजेंट हो, अलग बात है. करेक्ट सर. क्या? करेक्ट सर. मैं तो बोलता वो हूँ. बहुत ही इंटेलिजेंट है. हाँ, मालूम है. विजडम है उनके पास विजडम है. मेरे पास नहीं है. दिमाग है उनके पास, मेरे पास नहीं है. लेकिन मेरे पास दिल है. नहीं, आपके पास बहुत दिमाग है. कुछ भी सर, मैं दिल से सोचता हूँ. दिमाग यूज नहीं होता. आपने ऑपरेटिव वर्ड है बहुत दिमाग. Too much. आप लोगों के पास इतना दिमाग है, तभी तो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करके मनोरंजन करते हो. नहीं, हम लोग दिलो दिमाग से करते हैं. मेरा दिल होता है, इसका दिमाग होता है. अच्छा कॉम्बिनेशन है. मेरा भी दिल होता है, कुछ भी रैंडम फेलो. तेरा दिल कहाँ होता है फातवाड़ी? दिल कहाँ है बताओ. दिल कहाँ है बता दे फातवाड़ी, बता दे. जब दिल कहता है तभी तो दिमाग काम करता है ना. नहीं सर, मैं बताती हूँ. मेरा दिल कहाँ है? मैं कहता हूँ काम करती है. मेरा दिल कहाँ है? मेरा दिल कहाँ है? मेरे बंधुओं के पास है. हमारा वोट आपको देगा फातवाड़ी जी. हमारा वोट आपके लिए. आपका बस साइन बता दो कौन सा है, हम स्टैम्प कर देंगे वहीं पे. दिल. हाँ. हार्ट ऑफ हियरिंग. वेरी गुड. थैंक यू सो मच सर. एंड यस, आपके हिसाब से माचो गाना कौन सा है? आपने दोनों बता दिया. यस, यू टोल्ड अस बोथ एक्चुअली. टू सॉन्ग्स ही गिव अस. हां, वेरी गुड. आपने वो मूवी देखी है सूरमा? सूरमा थोड़ी बहुत देखी मैंने, फिर बंद कर दी थी. उसमें एक गाना है, अच्छे गाने. उसमें गाना ना, तगड़े रे तगड़े दट्टे सूरमा. That's a nice song. That's I was thinking, isn't that another macho song? Yeah. Or yeah. I think the word surma itself actually is somebody who's what is the meaning, sir? Surma का मतलब क्या है, sir? Is it about courageous? Surma means वीर, जो लड़ाई में लड़ने वाले सूरमा होते हैं ना. Wonderful, wonderful. Somebody who's courageous that way. Okay, yeah, wonderful. Yeah. हाँ, the way the word itself is courageous, macho word. Correct. Yeah. Correct. तो आप सर, आपने अपने आप को डिफाइन किया एज माचो रंजीत सिंह भाटिया. तो आप बताइए, आपके हिसाब से, इन योर व्यू पॉइंट, व्हाट इज माचोपंथी?
Macho का मतलब क्या होता है? What does it? How does one get that title? How do you No, assign how that? do you define How do you macho? define Who is macho? macho for you? हाँ, yes. माचो मीन्स बहुत बोल्ड होना चाहिए, हाँ. बोल्ड होना चाहिए. बॉडी बिल्डर तो खैर चलो ठीक ही है, Body बॉडी भी होनी चाहिए, हाँ. लेकिन Is it बोल्ड important? होना चाहिए, Is it important to एकदम have? बिंदास. नहीं मतलब बॉडी बनाना इम्पोर्टेंट है. नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि बॉडी बन गया तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं. हिम्मत होना चाहिए. हिम्मत, yes. बिल्कुल. Correct. वेरी गुड. थैंक यू सो मच सर. फर्स्ट क्लास. बहुत अच्छा सुनते था. रहेगा, आपके लिए वो गाना डेफिनेटली लगाऊंगा, ठीक है? हिम्मत. अच्छा. थैंक यू सो मच. बहुत दिनों के बाद आपका कॉल आया. हेलो, नमस्कार. पैम पैम में आपका हार्दिक स्वागत है. कौन है जय? पैम पैम. ओहो, पैम. कैसे है सर? सर माचो का शो आ गया तो वो भी आ गया. वाह. हाँ कैसे अभी सर? मैंने 40 मिनट एक्सरसाइज खत्म किया, तुम्हारा फोन कर लेता हूँ. हाँ वेरी गुड सर, वेरी गुड. अच्छा किया आपने. 40 में क्या किया? 40 मिनट में कुछ तो किया. ब्रेक में लाऊं को बोलता है इसलिए. नहीं, अभी एड्रेनालाइन इज हाई पंपिंग. सो एड्रेनालाइन इज हाई एंड पंपिंग. गाना जो लगाया मैंने ऐसे ना इसलिए ना. वेरी गुड. हाँ बोलो. नहीं, माचो का बोले ना, तो या एज यू सेड, जो उसका जो डेफिनेशन है, इट हैज बीन चेंजिंग. जब से मैंने मूवी देखना शुरू किया तो ऑफ कोर्स उस समय के जो मैस्टरमाइंड थे धर्मेंद्र. आई डोंट रिमेम्बर एनी स्पेसिफिक. उस जमाने में से गाने लिखने आते बिकॉज मोस्टली इट वाज फनी सॉन्ग और रोमांटिक सॉन्ग. तो माचो के पास गाने उन जमाने में थे नहीं, बट धर्मेंद्र वाज आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्ली को उसमें लाइक मेल ब्यूटी से एसोसिएट कर सकते हैं. ट्रू. And of course there were some action movies he did, so that definitely जैसे यादों की बारात थी, प्रतिज्ञा. So definitely there were where he definitely played the role. प्रतिज्ञा especially where he was a single-handedly, of course उसमें something hard to believe, but like he alone fought the whole the Daku gang, whatever, right? As he was not even a police officer. So वो थे. And then I think I remember Joy Mukherjee, he was very well built, and I think there was one nice song on Joy Mukherjee, बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे. उसमें एक लाइन भी है कि सबसे पहले सुनो मियाँ करके वर्जिश बनो जवान. हाँ करेक्ट, सही है. स्टाइल से उठे कदम, न ज्यादा और पेट कम, राइट? Exactly. That was a macho. So Joy Mukherjee definitely was there, and then fast forward many years because उसमें कोई नहीं आया. And then I don't know who came first, maybe Salman or Sunny. But of course I like Sunny there a lot. So उनका था घायल जो movie थी, so was macho, right? And then of course I think Akshay came along. Akshay had some police officer role and he was also well built. So I think if we only talk about like male beauty, well built was there, and then also playing a male protagonist of doing something daring. So yeah, उनका नाम है. Yeah. Then of course in recent times we have one and only John. So John. Recent times. John, of course, is, John my actually favorite. contemporary of Akshay Kumar, by the way. Yes, John Abraham and all that. Yeah, they were like contemporaries. That's true. हाँ. But anyway, Right? good. I agree with you. But yeah, John of course is my favorite. So उनका है जो गाना था है जुनू. So that song is beautifully done, beautiful lyrics है उसमें. है जुनू सा सीने में. Hey, Jonas, I don't know if it's actually a macho kind of a song, is it? Because it's more a motivational song as opposed to. Zilo Pal दौर अपना भी आएगा. हाँ, लेकिन isn't it more of a motivational song as opposed to something blowing your own trumpet? Yeah, kind of motivation with like friends fooling around. So, but yeah, but unka, I think he doesn't have really macho song until late. He does. Desi Boys. Make some noise for Desi. आपका favorite film है ना? नहीं? Yeah, but that is negative for me. So मैं उससे I will not say song like that, but yeah, I don't think he has any song which actually talks about him worshipping him all the stuff, right? He doesn't have the kind of song. Yeah. He does. नहीं है उसका कुछ ऐसा कुछ what do you call that self-tooting गाना नहीं है मेरे ख्याल से John Abraham का. नहीं है. I think वो कौन सी मूवी थी मुन्ना सर्वे जिसमें I think in a negative role where he is like not playing probably positive, he is negative, yeah. Probably. But sir, आपने अच्छा किया. आपने आपका you told us about your your concept of macho and also you talked about some songs. Did he talk about his concept of macho? He did, no? What did he say? Just okay. I'll Sir, have to what repeat. is Sir, your- जो भी आपने वो repeat कर दो sir एक बार. नहीं, उन्होंने changing time So बोला. coming back. So मैंने बोला ना. He didn't talk about his concept. की क्या डाल तू?
हाँ बोलो सर. बोले तो आपका Well, concept. my concept includes definitely कि fit होना चाहिए. Sir, Whether you have don't talk about me, sir, please. whether you have a 38 inch chest or 42 doesn't matter, but fit होना चाहिए. Ah, Right? yeah. Fit होना चाहिए, and then of course in a positive role, you have a daring to go cross the limits to do good for people who mean everything to you. So yeah, that is definitely a definition of macho. So for you, it's all about fitness. Not all about fitness, but definitely a lot about fitness. Yeah. Fit होना चाहिए. Everybody should be fit. Oh, everybody should be fit. Should try to be fit. But shouldn't they be befitting? No, if you are fit, you can give a befitting reply. But You gotta be fit to be प्रयास fitting. करना चाहिए कि थोड़ा सा व्यायाम करें, fit रहे. So that definitely, it's about life, right? The more fit you are, you can live longer and take care of who are important in your life. So, हाँ, आप बोलते हैं it's all about fitness, not about courage. I didn't say all about fitness. Fitness has a lot to do, but courage definitely होना चाहिए. So would you say that a person who is physically challenged, for instance, has a disability, cannot be macho? Oh, yeah, अलग twist है. No. See, that is the question is totally changing. No. You talk about Hindi movies and songs. Hindi मैं उस movies संदर्भ में only. बात कर रहा हूँ. No, we're talking about macho. We're not talking about the movie. We're not talking about the movie image. We're talking Yeah. about your image of macho. Your image of macho. So suppose So, a like- person cannot be physically fit. Like for instance, even in a Hindi movie, you saw, right? What is that movie? Appu Raja or whatever. Kamal plays Correct. a little person, right? challenged person, yeah. Somebody who's vertically challenged. Yeah. And then in Zero, Shah Shah Rukh Rukh Khan, plays the role of a short person as Yeah, well. yeah. So in which Yeah, case? see, अगर physical limitation, there's nothing you can do. But in generally speaking, मैं बोल रहा हूँ कि if you are like a general person, then you try to be fit. मैं बोल रहा हूँ. So But if I you kind are of challenged by that, of course, you cannot do anything about it. But yeah, definitely, it's not all about fitness, but definitely. So a lot to do I with hear what fitness you're if saying. you So can. I just want to correct me if I'm wrong, Pranabji. You're saying that fitness according to their ability, right? Not about somebody should be able to do whatever they can. So, for instance, To the best of their ability. Sanjeev Kumar could never play a macho role. But I think he was very Best macho in the... hello. he Have was- you seen his role as a dacoit? Have you seen his role in Sholay? Hold on, I'm saying He because... gives flying kick. Yeah. What are you talking about? I think that... Yeah. Exactly. Why not? We can. उड़ उड़ के मारता है. उस role में we can say he was macho because he employs two guys to go after the guy, right? Yeah. Exactly. Yeah, exactly. For me, that was a very macho character. And he climbs the horse without any support, by the way. Can you imagine how hard it Yeah, is? he jumps up. Oh my god. Oh, don't go there. But what? But yeah, that role can be called macho. Agree, fully agree with that. Yes. Very good, sir. Yeah, yeah. Thank you so much, sir. आपने कॉल किया, हमारा शो धन्य हो गया. No, Thank you, sir. seriously. Thank you so much for Thank you, calling in. thank Have you. a beautiful, fantastic evening, sir. Thank you. And of course, somebody is trying to call us. Let's go to them. We might probably take one more caller. Hello, hi. नमस्कार, आपका हर स्वागत है पैम पैम के माचो मंडेस में. Who's this? पैम पैम. ओए होए, मर्चेंट साहब बताइए. वो गाना याद आ गया यार. हाँ. गजरा रे गजरा तेरे कारे कारे नैना. गजरा रे गजरा तेरे कारे कारे नैना. आजा आजा न मेरी अंगड़ाई टूटे. ये ऐश्वर्या अभिषेक और अमिताभ बड़ा दबंग गाना. सर ये बोलिए पहला हमें कि आपको याद आया फर्स्ट ऐश्वर्या का लाइन ना? हाँ, हाँ याद तो देखा आ गया, मेरे को याद आप आ तो ना गया। सही में याद है बस उनका ऐश्वर्या का लाइन अगड़ा ही टूटे ना. वेल थैंक यू सो मच सर. सुनते रहिएगा. आपके लिए एक सुपर डुपर अमिताभ बच्चन गाना लगाने वाला हूँ. ठीक है. ओ थैंक यू. मैं Thank तो you. डिनर दे रहा था, मेरे को सारे दिमाग में गाना आ गया. वेरी गुड सर. आप आराम तो से मैं डिनर खाइएगा. डिनर रोकते मैंने कहा पहले आपको पकड़ूं मैं. ना गाना सर आप सुनो वही डिनर है। रोकिए मत. आप डिनर कीजिएगा. अभी गाना सुनिएगा. सुपर गाना. फिल्म बकवास था लेकिन गाना मस्त है. हजम हो जाएगा आपका खाना. ठीक है. ओए बिल्कुल बिल्कुल. सुनो सुनो सर. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर. एंड आपका बच्चन सुनिएगा एक सुपर डुपर. अभी तक हमने आमिर खान का बात नहीं किया बोला लेकिन ये गाना सुनो. फादर ने एकदम मेट्रोसेक्सुअल वाला माचो गाना दे दिया हमें. कोई कहे कहता रहे वो तो है ही लेकिन ये गाना भी सुनिएगा. मस्त है. फ्रॉम द टॉप फिल्म कॉल्ड Thugs of Hindustan, a total macho, machismo, testosterone भरित गाना. वॉशमलर
फिरंगी शैतान की लुगाई रात है, इसकी अदा में कोहनूर का जमाल है, शौकीन है मिजाज से मियां कमाल है, अंगूर के निचोड़ में नहा के आई है, मौके का फायदा उठा ले बेमिसाल है। हुड़दंग मचे शोर मचे हल्ले है, जब तक न ढले रात जश्न कर ले, हाँ तिरक 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 झूम ले, वशमल्ले 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 यार वशमल्ले, हुड़दंग मचे शोर मचे हल्ले है, जब तक न ढले रात जश्न कर ले, हाँ तिरक 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 झूम ले, वशमल्ले 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 यार वशमल्ले। And Amitav Bachchan, Ajay Atul का कॉम्बिनेशन है and अमिताभ भट्टाचार्य का लिरिक्स and I told you right, ये गाना जो गाए हैं ना एकदम पावरफुल वॉइसेस बन जाए, सुकी पाजी के साथ में विशाल दादू। मैं प्यार से विशाल दादू बुलाता हूँ। काजी बोले पीना पाप है, काजी बोले पीना पाप है, लेकिन अपनी तबीयत मदिरा छाप है, ना बंधु न सखा अपना कौन सखा, एक साथे ही माई बाप है। का प्रॉमिस बन जाएंगे, गाना आता ना हो फिर भी गाएंगे, सुर बेहाल तो क्या झूठे ताल तो क्या, इतनी भूल चूक माफ है, सूरज को डूबने से पहले ही सलाम है, होती भी अकड़ों की दोपहर भी शाम है, गुस्ताख जोश ने जरा तकड़ी जो मार दी, देखो जमीन पे होश गिर पड़ा धड़ाम है, हुड़दंग मचे शोर मचे हल्ले, जब तक न ढले रात दर्शन कर ले, तिरक 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 झूम ले, वशमल्ले 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 वशमल्ले। पता नहीं, तूने बताया कि रणबीर कपूर का एक तेरे पास गाना है, राइट? So I'm thinking, I think of 1, 2. I definitely can think of 3 songs, but actually third song I cannot consider it as a macho song because it's more about just wooing the girls. क्या रे? हाँ. कौन सा वाला? एक गाना था उनका जो फिल्म था हसीना बच के रहना, बचना है हसीना, total macho song. He Really, talks about that he's the one who's like all that. लेकिन उनका 2-3 गाना और है उनका, मालूम है कौन सा वाला? हाँ. बताओ. हजारे छोकरे भेजा ना ठोकरे आरे ला है अपूर, Very good. दंगा नहीं करना पंगा नहीं करना, लड़ दूंगा मैं तेरे वरना तेरी टाइट टाइट फिश. Very good, Faltwani. हाँ, that's another one. He's got one. I think even Matar Gashti is a macho song. More than Matar Gashti. हाँ. That song which is some Jagga Jasoos. बदतमीज दिल. बदतमीज दिल. Yeah, that whole song is about machismo. I will give it to you. पान में पुदीना देखा ना कने की नदी मुक्का मारना and टशन में आना. हाँ. Yeah, but you know, I want to end with a nice song for him. What do you think? Well, उसके लिए we got to recognize the guy. The guy is a good actor. I feel he was a good friend of mine. So obviously, ना उसने मेरे लिए Happy Birthday भी गाया था, on air सबका सामने आके बात किया. तो बनता है closing out machismo song with the guy. Which one? I don't want to end it with Hrithik Roshan. Hrithik Roshan got no macho songs with him. He does. He does. Hrithik Roshan. What song is that, man? That's right. We don't know. Hello, Pam Pam. हेलो पैम पैम मंत्रनी। हेलो, कैसी हो दीपा? दीपा कैसी है भाई? दीपा कौन बीच में बोल रहा है? बीच में वो मुझे मालूम नहीं, मैं भी बीच में कोई नहीं बोल रहा है, रेडियो पे बोल रहा है. ओके. हाँ दीपा आ गई. दीपा दीपा रानी कैसी है दीपा रानी? तेरे को मालूम है दीपा को जीवन पसंद है? सबको जीवन पसंद है, लेकिन दीपा अजब किस्म की लिसनर है तू. एक कौन मालूम है? कुलभूषण करबांडा. अजीब से. हाँ, आज तो आपको पता है मुझे कैसे हंसाना चाहिए. आज तो को हाँ मुझे मालूम है. हाँ एग्जैक्टली दीपा. हाँ दीपा तो देखो तेरा सलमान खान गाना डाल दिया रे भाई, वही समझ दीपा. हाँ इसीलिए मैंने कॉल किया ना. अच्छा तो बताओ कौन सा गाना?
हाँ नहीं, मैंने इसलिए कॉल किया, मैं फालतू रानी को बोलने वाली थी रणबीर कपूर का कौन सा मैचो गाना है। हाँ बताओ कौन सा मैचो गाना? सदा हक ऐथे रख। That's a good point, Deepa. Yeah. Nice. Don't skip my mind though. हाँ. Not bad, Deepa. देखो, that's why Deepa हमारा शो रोज सुना करो. Some of our taste rub on to you. It's good. क्या? देखो हेलो what देखो She likes Ranbir रोज Kapoor. सुनती नहीं हूँ She क्या? likes कुछ Ranbir भी Kapoor. नहीं अच्छा हुआ ना, देखो मैं बोला अच्छा है, इसीलिए देखो ना अभी मुझे फिर से मत चिढ़ाओ। दीपा क्या डराती है बॉस? I know Deepa, come on Deepa, the point is you listen to this every day, your quality taste in music also ऐसा increasing कुछ slowly. नहीं, मेरी क्वालिटी पहले से ही बहुत अच्छी, इसीलिए मैंने सुनना शुरू किया ना। हाँ, Because हम दोनों की exactly. फ्रीक्वेंसी मैच होती है। Exactly Deepa, वही बोल रहा हूँ ना, जैसे हमारा रेडियो का फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है ना, हमारे दिमाग में फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है अभी slowly. हाँ सब मैच हो रहा है। See, you're expanding your repertoire of songs to 2000s nowadays. Yeah. And you're talking about new heroes than Salman Khan, talking about Ranbir Kapoor. Can you imagine, Deepa? Already, I'll ask you. अरे, No, Deepa, don't take my word for it. Deepa, wait, Deepa, don't take my word for it. Father, tell me. 6 months down previously, go back 6 months, 1 year. Yeah. You think Deepa would have called for Ranbir Kapoor song? No. Exactly. अरे ये क्या बात हुई? मैं क्या सुनती नहीं हूँ, मुझे रणबीर कपूर भी पसंद है। हाँ मालूम है, मेरे को मालूम है। लेकिन आपने कॉल नहीं किया तब ना, अभी तक कॉल कर रहे हैं। मैंने कॉल किया, इसीलिए कॉल किया ना। Okay, अभी Deepa, मैं just for you. पहले ही मुझे याद आया Deepa. मैचो सॉन्ग वो। Deepa. उसमें एक और नागा परिंदे, even that one is nice. Deepa, I'll play a beautiful song of Ranbir Kapoor just for you. How about that? Just for you. ठीक है। Okay, And this by the dedicated. way, वो चेतना ने गेस किया, मैं उसको बोल रही थी तुम कॉल करो और बोलो। Deepa, I'm telling And you, right? उसने Your भी kids. तुम लोगों ने लगा दिया होगा। Deepa, your kids are awesome. Yeah. Seriously, they are, our frequency matches so well actually. But you're getting there. Tell her that's okay. There's hope for you still. You're getting there. Okay? भगवान। But this song dedicated to you, Deepa. हाँ ठीक है। This song totally for you, Deepa. This is a Ranbir Kapoor total macho song. भेजाना ठोकरे आरेला है अपुन, पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई फिश। Exactly. If you take panga with Deepa, tight fist कर देगी बलजान. Nice song बलजान. With her also by the way. इसके साथ बोलने वाले हम लोग have a nice evening. मिलते हैं हम लोग आपको कल सवेरे bright and early with good morning पे. Don't forget to tune in, Madhujan. Have a beautiful, fantastic evening. Good night. तब खैर. And a प्यार भरा. मच नहीं करने का, लफड़ा नहीं करने का, मच नहीं करने का, लफड़ा नहीं करने का, सुबह सुबह धूप में भजिया नहीं करने का, बदमाश चक्रा मस्ती का टुकड़ा जाने का मसे आया रे, ये हट जा रे छोकरे, भेजा ना ठोकरे, आरेला है अपुन, पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई। वैसे ना फालतू के मामले में ये गाना जो फिल्म जो है, हाँ. you know किसका फाइनेंसिंग से हुआ था ये फिल्म? किसके? सलमान खान फाइनेंशियल्स. Nice. मतलब सलमान का प्रोडक्शन मैनेजर. The movie is called चिराग पार्टी. That बच्चों was- के साथ रख के सही बनाया था फिल्म उन्होंने. That's right. That's before he stole Katrina. टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का, खाली पॉकेट में बंदा ले, उसे खर्चा पानी देने का, तो भी जिंदगी है सब मेरी बारी है, छेड़ा तो जलेगा तू। ये हट जा रे छोकरे, भेजा ना ठोकरे, और लाए अपुन, पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई फिश। माचा मटे. तेरी टाई टाई फिश, तेरी टाई टाई फिश, ऑफिस ऑफिस फिश फिश। आ रहा है ना? Great.
great music, Vinajan, for the best in entertainment and the best in music and the hottest tracks ever. You can get it on Radio D Hotties. For more information, go to me.